Good to go. Every time, once it just shows like a thumbs up that we are good to go. I'm like, okay, is my hair proper? Am I all Yeah. good? And all of that. That virtual event anxiety sort of just like kicks in. Till people join in. And Ansh, why don't we like do like a quick, just like an introduction, and we get into the session. Everybody, this is also the first session of our stage 3, which is about customize your creativity. There's no one size fits all answer to the question about how to break into UX design as such. I know this is one of the hottest trends that is happening right now, and people are going all crazy about okay how creds UI UX design is, and a lot of other platforms as well. But this is probably some of the hottest trends that's happening in the industry at the moment, and I'm great that we're doing this with Ansh today. Ansh is a senior product designer at Zuddl. Am I pronouncing it correctly? Is Yeah, it you're close. It's Zuddl. okay? And he's also an avid content creator. I've seen a lot of reels, and if you folks have been following the Pepper page as well, you might have seen some collab reels that we have put out with Ansh. So it's going to be a great session, a great learning session, and anybody who wants to break into UX as a category of design, this could be like a great way for you. We're going to do like a quick presentation, and also we'll keep some time for you all to have like an audience Q&A, so that any questions that if you all might have, you can get that answered. But over to you, Ansh. Let's get this started, and let as many people as we can ask you questions about UX design in general, or maybe about content creation also. I also have a few questions about content creation for you. 100%, Pawan, 100%. So, yes, thank you for letting me take the stage. We are going to discuss how do you break into the field of UX design. And let's just understand what we will cover today. So, we'll figure out what is UX and what is UI, because you hear this phrase UX/UI design. What are the softwares and requirements to enter this field? What is Figma and how does it work? And how do you learn UX for free? Because a lot of people have this question as to, do I need to buy a course? Do I need to buy a certification? What exactly do I need to get a good job? So let's begin with the common assumption that most people believe कि अगर किसी tech startup में you have a good idea, this is how the life cycle works. You get an idea about a feature, you start coding, and you release it. But that is wrong. Just before you code, a group of designers and researchers sit together and understand कि हमारे को करना क्या है, what all resources do we have, how much time do we have, and what is the problem that we need to solve. क्योंकि अगर आप किसी फीचर को डायरेक्टली कोड करते हो एंड उसको रिलीज करते हो, रिलीज के बाद किसी गलती को फिक्स करने में बहुत एफर्ट लगता है. टू चेंज कोड, टू टेक फीडबैक एंड देन इम्प्लीमेंट इट इन कोड takes a lot of time. It is wise to find out all the errors in your design stage. तो अगर डिजाइन स्टेज में ही आपको अपनी सारी गलतियां दिख जाती है, you can fix them early on, prototype quickly, and then tell your developers that hey, ये design है, this is the blueprint, and you guys can now go ahead and code it. So in the longer run, companies avoid a lot of mistakes and they save a lot of money. So the question is, मैं आज आप सबको यहाँ मुफ्त का ज्ञान दे रहा हूँ, but मैंने कैसे शुरुआत करी? So I was a filmmaker who switched to engineering because I felt कि filmmaking में there's not enough stability. But during engineering, I realized that I wanted to do something creative, and that is where I found this beautiful intersection of technology and creativity, which is UX design. So after entering UX, I realized that a lot of companies in the upcoming space, जैसे अभी अगर आप Web3 देख लो या इंडिया की भी जितनी apps है आप देख लो, you would realize that they are growing fast, and because they are growing fast, they have a lot of capital and they are willing to invest in design. आज से 5 साल पहले इतना exposure नहीं था. तो लोगों को क्या होता था, अगर किसी ऐप का डिजाइन बेकार भी है, as long as it is getting the job done, it would still become a very successful app. बट धीरे धीरे जैसे दुनिया ग्लोबल हो गई, जैसे जैसे हम इंटरनेशनल एप्स को यूज करने लग गए, इंडियन कंज्यूमर को भी लगा कि डूड, इफ आई एम यूजिंग एन ऐप, इट शुड वर्क, इट शुड फील वेल. That is where the surge has come in. The demand for UX designers has increased. So I noticed this and I started going full on. So when I was in my college, I used to participate in a lot of college hackathons. Moving forward, I had the opportunity of competing at Hack MIT, Hack Harvard. The project that I made at Hack Harvard was later selected for the Microsoft Imagine Cup. So it showed me a lot about the world of pixels, राइट. बिकॉज यही अगर आप यूएक्स डिजाइनर नहीं होते, यही अगर आप किसी फिजिकल डोमेन में होते जहाँ पे your output is directly related to your input, it would take a lot of time to create impact.
But as a designer, when we go through research, when we create a system, the impact is really high. So you get paid well, you get in touch with your product managers, your developers, your users. So you have the opportunity to talk to all kinds of people. And the world of pixels moves really fast than the world of atoms, which gives you a lot of speed and a lot of scale. तो धीरे धीरे जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ, आई इवेंचुअली इंटर्न एट स्विगी एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर, and I interned with them twice. And after Swiggy, I realized that I have high risk appetite, so I joined the startup called Zuddl as their first product designer on board. At that point, it was just an idea, so I was responsible to design the entire MVP from scratch. तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा. मुझे रियलाइज हुआ कि डिज़ाइन सिस्टम्स की क्या वैल्यू होती है, स्केलेबिलिटी की क्या वैल्यू होती है. जब एक स्टार्टअप शुरू होता है तो आपको किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना होता है. Moving forward, I also entered content creation, so now I teach design on YouTube. This year, Zuddl just closed its Series A funding of 13.35 million from AWI and Qualcomm. तब धीरे धीरे we are expanding to US, and we just opened our first office in Abu Dhabi. So, coming back to the meat of today's session, what is UX and what is UI? अगर आप अपने टैब पे जाके anshmehra.com खोलोगे, you will have access to my website. This is how it looks. सो जो जो आपको अपनी आंखों के सामने दिख रहा है, एवरीथिंग दैट यू विजुअली सी, चाहे ये कंपोनेंट्स हो, चाहे ये आइकन्स हो, चाहे ये टेक्स्ट हो, एवरीथिंग कम्स अंडर योर यूजर इंटरफेस. इट इज बेसिकली दिस वॉल जिसके थ्रू मैं इस वेबसाइट से इंटरेक्ट कर रहा हूँ. तो आपको फ्रंट फेस पे जो कुछ दिख रहा है, जितने भी आपको ये कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, इट कम्स अंडर योर यूआई विच स्टैंड्स फॉर यूजर इंटरफेस. बट यही अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ, तो आपको रियलाइज होगा यहाँ पे एक टॉगल है विच सेज स्विच लाइट्स ऑन. एंड ये अगर मैं क्लिक करूंगा इस पे, तो ये पूरी की पूरी वेबसाइट जो ओरिजिनली एक डार्क थीम की है, ये लाइट थीम में कन्वर्ट हो जाएगी फॉर पीपल हु प्रेफर लाइट थीम. बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि अगर आप ये वेबसाइट दिन में खोलते हो 6 बजे से पहले, तो ये लाइट थीम में होगी. और यही अगर आप 6 PM के बाद मेरी वेबसाइट खोलते हो, तो ये डार्क थीम में खुलेगी. So it actually figures out where you are in the world through your browser, then it calculates your time and then decides कि मैं आपको लाइट थीम दिखाऊं या डार्क थीम दिखाऊं. अब ये जितनी भी कैलकुलेशन और डिसीजन मेकिंग हो रही है, ये बैक एंड पे हो रही है. ये आपको विजुअली नहीं दिख रही है, आपको सिर्फ फाइनल रिजल्ट दिखता है कि लाइट थीम है या डार्क थीम है. बट उसके पीछे का जो थॉट है, जो उसके पीछे का इंटेंट है, जो उसके पीछे की फंक्शनिंग है, it all comes under this big umbrella of defining the user experience. अब मिसकंसेप्शन ये है, लोगों को लगता है कि यूएक्स इज जस्ट अबाउट एप्स, बट दैट इज नॉट ट्रू. यूजर एक्सपीरियंस हर चीज का होता है. अगर आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे हो, अगर आप कहीं पर भी कोई मूवी देख रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो, हर चीज को कंज्यूम करने का एक एक्सपीरियंस होता है. आप एक यूजर हो, आप किसी चीज को कंज्यूम कर रहे हो, देयरफॉर दैट प्रोडक्ट्स यूएक्स will influence how you think about that product. बट अभी रिसेंटली पिछले 5-6 साल में, जैसी iOS आया, जैसी ऐप स्टोर पॉपुलर हुआ, a lot of people have started associating the word UX with digital apps. Also, I'll just keep checking the chat section. Kuch or yeah. So yeah, there's no questions yet. Awesome. So let's अंडरस्टैंड कि ये सब काम होता कहाँ पर है, राइट? तो लेट कर लो एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, इट इज कॉल्ड यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन. उसके अंदर बहुत से मिनी मिनी सब्जेक्ट्स हैं. देयर आर सब्जेक्ट्स लाइक इंटरैक्शन डिजाइन, देयर इज रिसर्च, देयर इज वायर फ्रेमिंग, देयर इज प्रोटोटाइपिंग, बहुत सी चीजें आती है. यूजर इंटरफेस बनाना उसका एक पार्ट है. यूएक्स एक बड़ा अम्ब्रेला है, उसके अंदर बहुत से छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं. उनमें से एक सब्जेक्ट है यूआई, विच इज यूजर इंटरफेस. तो जब कोई बोलता है ना यूएक्स स्लैश यूआई डिजाइन, एक्चुअली वो गलत है, क्योंकि उस स्लैश से आपको ये मिसकंसेप्शन आ जाती है कि शायद ये इंटरचेंजेबल है. मैं अपने आप को यूआई डिजाइनर बोलूँ या यूएक्स डिजाइनर बोलूँ, एक ही बात है, बट ऐसा नहीं है. जो यूएक्स डिजाइनर होता है उसकी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. जो यूआई डिजाइनर होता है उसकी एक स्पेशलाइजेशन होती है कि मैं सिर्फ आपके यूआई पे ध्यान दूंगा. यूआई बनाने का अभी सबसे जो इंटरेस्टिंग और सबसे मेरे हिसाब से मेरा फेवरेट सॉफ्टवेयर है, इट इज कॉल्ड फिग्मा. एंड फिग्मा को डाउनलोड करने के लिए यू कैन गो टू figma.com. इट्स अ फ्री टूल. जो बिगनिंग का प्लान है वो फ्री है. और कॉमन डाउट्स ये आते हैं कि फिग्मा को यूज करने के लिए क्या मुझे मैक की जरूरत है, क्या मुझे किसी एक्सपेंसिव लैपटॉप की जरूरत है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. फिग्मा इज अ सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन क्लाउड. तो अगर आपका लैपटॉप बहुत पुराना भी है, इट वुड वर्क वेरी फ्लुएंटली. बट हाँ, फिग्मा पे आप सिर्फ यूआई बनाते हो. इसका मतलब ये नहीं कि जिस आदमी को फिग्मा आता है उसको यूएक्स डिजाइन आता है, या जिसको फिग्मा आता है उसको यूआई डिजाइन आता है. बहुत से कंपोनेंट्स है. आगे जाके मैं आपके साथ ऐसी फ्री रिसोर्सेज शेयर करने वाला हूँ फ्रॉम द इंटायर इंटरनेट, जो आपको हेल्प करेगी आफ्टर दिस सेशन टू ब्रेक इनटू दिस फील्ड. सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम डज इट टेक?
मेरे हिसाब से 100 to 150 आवर्स तो लगने ही लगने हैं। अभी आगे जाके जो मैं आपको सिलेबस दूंगा, जो मैं आपको कंटेंट दूंगा, उस कंटेंट को अच्छे से खत्म करने के लिए यू नीड मिनिमम 100 to 150 आवर्स। जैसे ही आपके 100 150 आवर्स हो जाते हैं, आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना होता है। तो इंडस्ट्री में आपको जॉब तभी मिलती है जब आपका एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो का मतलब उसमें 2-3 केस स्टडीज हो, आपके प्रोटोटाइप्स हो, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, आगे जो मैं आपको रिसोर्स बताऊँगा, सब कुछ उसमें क्लियर हो जाएगा। तीसरा, डू आई नीड टू लर्न कोडिंग? बिल्कुल भी नहीं। डू आई नीड टू लर्न स्केचिंग? बिल्कुल भी नहीं। इट इज़ अ कंप्लीटली न्यू सब्जेक्ट। अगर आपको कोडिंग आती है, इट इज़ अ प्लस पॉइंट। बट ऐसा नहीं कि कोडिंग के बिना आप यूएक्स डिज़ाइनर नहीं बन सकते, बिकॉज़ इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड। लोगों को लगता है कि जस्ट बिकॉज़ इट इज़ डीलिंग विद ऐप्स हो सकता है आपको कोडिंग की नीड हो। फोर्थ क्वेश्चन, डू आई नीड अ डिज़ाइन डिग्री? टू बी ऑनेस्ट, इफ यू कैन अफोर्ड इट, गो फॉर इट। मैं आपको सही बता रहा हूँ, डिग्री का कोई नुकसान नहीं है। बट हाँ, अगर अगर आप ऑलरेडी एक डिग्री कर चुके हो, या अगर आपको अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज आ रहे हैं, देन अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर मत डालो, बिकॉज बिना डिग्री के भी आप खुद से यूएक्स सीख के एक बहुत अच्छी जॉब ले सकते हो। इनफैक्ट मैं काफी सारे सीनियर प्रोडक्ट डिजाइनर्स को जानता हूँ, हु आर सेल्फ टॉट डिजाइनर्स, हु आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, दे आर वर्किंग एट रियली गुड कंपनीज, बट दे आर ऑल एजुकेटेड। तो ऐसा नहीं कि वो 12th पास है, उन्होंने 12th के बाद कोई ना कोई एजुकेशन करी है, बिकॉज एजुकेशन सॉर्ट ऑफ शेप्स यू एज अ पर्सन, राइट? तो आदमी के पास अगर डिग्री हो तो उसके लिए कहीं ना कहीं बेटर दरवाजे और खुल जाते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको जितना भी फ्री कंटेंट अवेलेबल है, जितने भी फ्री रिसोर्सेज है, पहले उनको यूज करना। तो अभी मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फ्री रिसोर्सेज शेयर करने वाला हूँ, विच विल हेल्प यू गेट किक स्टार्टेड। तो सबसे पहले there's this, मैं चैट सेक्शन में ये डाल रहा हूँ। सबसे पहले दिस थिंग कॉल्ड यूएक्स मास्टर क्लास डॉट डिजाइन। जब आप इस वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो आपको ना एक पूरा लिस्ट मिलेगा, लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज दैट इज सॉर्ट ऑफ वेरी वेरी ऑन पॉइंट। तो आप नीचे जाओगे, इन्होंने बिल्कुल नोशन पेज की तरह इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, इंटरैक्शंस, हर चीज पे बहुत डिटेल में रिसोर्सेज डाली हुई है। सेकंड इज, अगर आपको मोबाइल डिजाइन में स्पेसिफिकली, अगर आपको मोबाइल एप्स पे अगर काम करना है, तो मोबाइल एप्स की रिसोर्सेज के लिए दिस इज वेबसाइट कॉल लर्न मोबाइल डॉट डिजाइन। तो जब आप इस वेबसाइट पे जाओगे, आपको वीडियोस, रिसोर्सेज, आर्टिकल्स, बहुत सी चीजें मिलेगी, जिनको यूज करके आप आगे अपना बिजनेस और व्हाटएवर एजेंसी अपना किक स्टार्ट कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको बहुत फाउंडेशनल लेवल पे थ्योरी सीखनी है, तो एप्पल ने अपनी वेबसाइट पे ह्यूमन इंटरफेस गाइडलाइंस करके एक पेज है उनका, वहां पे बहुत से इंटरेस्टिंग पैटर्न्स के बारे में विद वीडियोस, विद एग्जांपल बहुत अच्छे से समझाया है कि आप कैसे अपने यूआई डिजाइन को इम्प्रूव कर सकते हो। इनफैक्ट लेट मी शेयर यू दिस थिंग एज वेल। देयर इज अ न्यू वेबसाइट, इट्स कॉल्ड शेट नेटवर्क। यहाँ पे यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सीनियर डिजाइनर्स लाइक लुई फ्रॉम फिग्मा। सो लुई फ्रॉम फिग्मा इज लाइक अ वेरी सीनियर डिजाइनर, इज अ डिजाइनर एडवोकेट एट फिग्मा। तो उनका इस पे प्रोफाइल है। इनकी प्रोफाइल पे जाके यू कैन एक्चुअली सी अ लॉट ऑफ रिसोर्स दैट ही हैज शेयर्ड, राइट? एंड अभी अगर आप जस्ट इंडस्ट्री में एंटर कर ही रहे हो, एंड आपको है कि मैं अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाऊँ, मैं अपना केस स्टडी कैसे बनाऊँ, सो देयर इज वेबसाइट कॉल्ड कोफोलियोस। तो कोफोलियोस पे जाके यू कैन सी कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सब वेबसाइट्स पे कैसे लोग अप्लाई करते हैं, उनके सीवी में ऐसा क्या है जो उनको इतनी अच्छी जॉब्स मिल जाती है। सो यू विल लर्न अ लॉट। अगर आपको अपनी यूआई स्किल्स इंप्रूव करनी है, सो दिस इज अ ब्लॉग कॉल्ड uilearn.com। यहाँ पे आपको बहुत से प्रैक्टिकल टिप्स मिलेंगे ऑन इम्प्रूविंग योर यूआई। एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आज हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट इट इज द सब्जेक्ट ऑफ डिक्लेयरिंग योर डिजाइन सिस्टम। तो डिजाइन सिस्टम में क्या होता है कि जब आप एक कंपनी के लिए काम करते हो, आपका गोल ये होता है कि यू मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग सिंपलर। तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का हमेशा एक सिस्टम होना चाहिए, एक प्रोसेस होना चाहिए। जैसे जैसे आप एक सिस्टम डेवलप करोगे, आपकी कंपनी के लिए आसान हो जाएगा टू शिप मोर फीचर्स। तो हर्ष, अगर आप शेटनेटवर्क.com में से राइट साइड से वो स्लैश का सारा यूआरएल उठा दोगे, तो आपको गूगल पे शेट नेटवर्क मिल जाएगा। सो यस, अगर आपको डिजाइन सिस्टम्स के बारे में सीखना है, तो देयर इज दिस वेबसाइट कॉल्ड designsystems.com। यहाँ पे आपको आर्टिकल्स मिलेंगे। देन देयर इज दिस वेबसाइट कॉल्ड डिजाइन सिस्टम्स रेपो, जहाँ पे आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी ऑफ सम ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डिजाइन सिस्टम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। Then the third link is extremely powerful, a brilliant website called component.gallery, जहाँ पे आप कंपोनेंट लेवल पे सीख सकते हो कि बड़ी बड़ी डिजाइन कंपनीज कैसे अपना सिस्टम्स बनाती है। तो लेट कर लो, अगर एक बटन की बात की जाए, एट द फोरफ्रंट आपको लगेगा कि एक बटन ही तो है, बट जब आप इस कंपोनेंट गैलरी पे जाके बटन पे क्लिक करोगे, तो आपको रियलाइज होगा कि उबर, एटलेशियन एंड बड़े बड़े कंपनीज उस बटन के डिजाइन सिस्टम को कैसे डिक्लेयर करती है। तो आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। एक और क्यूरेटेड
लिंक है, इट्स कॉल्ड heydesign.systems, जहाँ पे जाके आपको बहुत सी रिसोर्सेज एक बारी में मिल जाएगी. A lot of people tell me कुछ रीडिंग मटेरियल बता दो, कुछ आर्टिकल्स बता दो. तो there's this writer called Dan Sapio on Medium. So he writes brilliant articles. मतलब अगर आपने इनके आर्टिकल्स पढ़ लिए तो योर लाइफ इज गोना चेंज. मतलब आप एक महीने में इतना सीख जाओगे जितना आप 6 महीने में नहीं सीख सकते. थैंक यू Trishita. I'm happy that you're liking all the resources. इनफैक्ट डैन सेपियो का एक बहुत तगड़ा आर्टिकल है which is extremely powerful. It's called 47 key lessons for UI and UX designers. Just make sure you read this article. You will absolutely love it. एंड मैंने अपनी स्लाइड में भी डाला हुआ है कि आप जो जो सीख रहे हो प्लीज उसको डॉक्यूमेंट कर लेना, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप चीजें सीखते जा रहे हो एंड जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है आप उनको भूलते जा रहे हो. राइट, सो दैट शुड नॉट हैपन. नोशन एक फ्री सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप ये सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर सकते हो. इनफैक्ट मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल पे एक फ्री 15 एपिसोड का कोर्स डाला है, जो मेरे हिसाब से अगर किसी ने ये 15 एपिसोड देख लिए, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, अगर आपने ये 15 एपिसोड देख लिया, मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपको इससे ज़्यादा नीड ही नहीं पड़ेगी. नीड ही नहीं पड़ेगी. सो लेट मी शो यू एक्चुअली. तो हाँ, दिस इज द इंटायर कोर्स. इट्स अवेलेबल इन बोथ हिंदी एंड इन इंग्लिश. तो यहाँ पे आपको बिगनिंग से लेके एंड तक. Article name is on the very top here. So this is the article name by Dan Sapio. तो मेरे YouTube चैनल पे भी यू विल हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्री. जो अभी मैंने नोशन का पेज डाला हुआ है, जो अभी मैंने चैट सेक्शन में ये नोशन का पेज डाला हुआ है, इसमें जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको कोर्सेज तो मिलेंगे ही, एक 15 डे का बूस्टर प्लान है. उस 15 दिन के बूस्टर प्लान में मैंने हर एक दिन के लिए एक एक रिसोर्स डाला हुआ है, जिससे जब आप वो 15 डेज बाद वो सिलेबस कंप्लीट करोगे यू विल बी ऑल सेट टू गेट योर ड्रीम जॉब. सो यस, अब मेरा मन है कि हम एक Q&A करें. ये मेरे नोशन पेज का स्क्रीनशॉट है, तो इससे आपको मेरा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा. इनफैक्ट आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम. तो अगर आपको बहुत इंटरेस्टिंग रील्स और डिजाइन रिसोर्सेज एंड इवेंट्स के बारे में जानना है, तो यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. बट या, आई होप कि अब वी आर ऑल सेट फॉर द Q&A. वी हैव अराउंड 7 minutes. So you folks can ask me your questions and let's get this started. Yeah, and I think so many resources. I have to bookmark all of these. I've just opened it, all of them in a new tab, and I'm going to check them out later. And so you can stop the screen share, and then I can show some of the questions that are here in the Q&A tab. Simha is asking, what are the top areas I should focus on to distinguish myself from the rest? I think this is from the perspective if you are a designer yourself, and let's say you're a freelancer designer and who's working independently, how exactly can you distinguish yourself from others? Yeah, so I think let's just categorize this into two categories of skills: hard skills and soft skills. Hard skill मतलब आप actually में क्या काम करते हो. In your hard skills, one is you need to be very strong with building systems on Figma, जिससे आप जो भी designs बना रहे हो they are scalable. Second is your ability to prototype. अगर आपको प्रोटोटाइपिंग आती है तो जब भी आपकी मीटिंग होगी इन्वेस्टर्स के साथ, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, तो आपको उनको फिग्मा फाइल्स नहीं, आप उनको प्रोटोटाइप दिखा पाओगे, क्योंकि नॉन डिजाइनर्स को प्रोटोटाइप समझ आता है, डिजाइन फाइल समझ नहीं आती. तीसरा, योर विजुअल डिजाइन. Everything that you design is not only functional, but it looks good, it feels good, it feels premium. So your ability to design aesthetic interfaces is very very important. Now we come to the soft skills. सॉफ्ट स्किल्स में ऐसी स्किल्स है जो आपकी रिटर्न्स को 10x कर देगी. ये है वो छोटा सा ग्रे एरिया जहां पे यू कैन लिटरली इंक्रीज योर इनकम बाय 5x. फर्स्ट इज योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली एंड सेल. Right, because in the end you have to sell your designs. Even if you have the greatest of ideas and design files, if you're not able to bring everyone on board, it is useless. Right, second, your ability to define problems. जब भी आपको कंपनी में कोई प्रॉब्लम मिलेगी, you have to ask yourself, is this the first problem I should solve, or is there something else, and what exactly is the problem? Because a lot of people are good at solving problems, they're terrible at defining the problem. So what they do is उनके उनके पास कुछ situation आती है, they define the problem incorrectly, they invest a lot of money in solving the wrong problem because they cannot recognize. Right, and third is just looking outside the prescribed syllabus. लोग क्या होता है, सिर्फ अपने डिजाइन फाइल्स में ही बह जाते हैं. Get outside the design world, talk to people, figure out marketing में क्या हो रहा है, figure out sales में क्या हो रहा है, Yeah. figure out filmmaking में क्या हो रहा है, and increase your pattern recognition. If you do that, you'll be good to go. Yeah. I think I have one question which I also personally want to know from you because I saw your Notion and you were talking about note taking. Ved Pathak is asking how to make an effective note taking system. Like,
how exactly are you doing this? And it's okay if you want to screen share and show something. Yeah, um, I can see. I've been using Notion since 2020, right? And I'm a huge, like, अगर आप मेरे को Instagram या YouTube पे मेरा content देखोगे, you'll be like, I am a huge fan of documentation because I feel like documentation sort of keeps everything on track. आपके brain पे नहीं आपको rely करना पड़ता. yeah. Fact, not to sound very philosophical, but as species, we have grown because our genes are documented. Agar genetically we weren't documented, then we would never evolve. Evolution is possible only because we document and we build upon what we already know. For people who don't document, they will forget everything. They have to start from scratch. So I have two pages that I have on my Notion. Let me share this. So I'll tell you the logic behind it, right? It's basically I take screenshots and I write headings. तो लेट कर लो मैंने कुछ इंटरेस्टिंग सीखा तो मैं हेडिंग में लिख दूंगा गुड एनिमेशन विद ब्राइट कलर्स देन आई वुड पेस्ट द लिंक एंड आई वुड पेस्ट द स्क्रीनशॉट. इट इज लिटरली माई ओन पर्सनल सर्च इंजन. आप समझो कि ये मेरा खुद का Mm-hmm. गूगल है. माई नोशन इज माई ओन सर्च Mm-hmm. इंजन. Because on Google you don't get the best results, you get the best SEO Yeah. results, Yeah. right? But this is going to be your own personal Google moving forward. Yeah. Yeah. Is this, have you like made a video about this or Yeah, like yeah, any yeah. I screenshot? teach a lot. I teach a lot about Notion. I keep posting it on my Instagram. Okay, super. Yeah. Um, some other questions here are, how do okay, okay, this is a great question. I think post creating a portfolio, how do you really understand how to price yourself? How do you find design jobs? I think these are two different questions. How Yeah, to yeah, price yeah. yourself is one, and how to find design jobs is the second See, one. I Let's just think, take one by. yeah, I think that the market tells you your price. So I recommend everyone to work as a freelancer before applying for full-time jobs. Go for freelancing. And अगर आपको freelance में महीने का 70 to 80,000 rupees मिल रहा है, that means that in a full-time job you will get somewhere around 1 lakh or 115 because freelance में they pay you little, right? So if someone is paying you 70 80k, and when I say someone intelligent, so the thing is freelance से आप एक ढोंग में भी आ जाते हो because in freelance you get a lot of dumb clients and you get paid from dumb clients, but companies are not dumb. So the thing is you have to make sure that you're working for smart people. Those smart people will tell you your market value. Abhi on current jo average UX designer salary is chal rahi hai for a person who has experience of 2 years is around 70 to 80k per month in both startups and in tech companies. But this means this is only available for a person jiska Figma is strong, design systems is strong, visual design is strong, prototyping is strong. So I've made like a proper checklist. I've made a YouTube video on this entire thing, how to apply to jobs. But yeah, market will tell you. And what was the second part of the question? How do you find design jobs? The first Yeah, one was yeah, yeah. about pricing. Yeah, so firstly, you get your domain name, buyyourname.com. Second is you have two case studies, make your Notion portfolio. Third is you go to all the important websites. Important websites matlab Behance, Dribble, Instagram, LinkedIn, Medium. Write on Medium. As the more you write on Medium, the better it is. There's TopTal, TOPTAL, TopTal. There is Angel List. Angel List के ऊपर you can go and put your profile. अगर आप इन सारी profiles पे हो, I'm pretty sure you will get some opportunity for sure. You just have to be good at what you do. People will come to you. If people are not giving you a job, it means that you have to work on yourself. Okay. I think the next question is about what's been trending since the last 2 days, which is about what do you have to say about Adobe acquiring Figma? Is it good for young designers or not? And I don't think, I mean, personally, you can share your opinion, but I am not sure if we can put it like a good or bad or a right or wrong decision and how the No, ecosystem will react to it. actually, see, it is not our place to comment. It is not our place to Yeah. be any judge of any of this, right? So Yeah. whoever has asked this question, forget about Adobe Figma. Please work on yourself. Figure out how can you Mm. become the next Figma or the next Adobe. A lot of people Mm. ask me, will AI replace our jobs? And they don't have a job. I'm like, dude, you don't even, you're worried about AI replacing UX jobs. You don't have a job yourself. Please work on yourself. Stop thinking about all these nonsense distractions and go work. And I think there every time there will come some of the other Yeah, distractions, right? I mean, this time yeah, it's Figma, there would be something else, yeah, and these things will never stop. And I think it's a great point that you should just focus on your craft and keep writing, keep creating, and just yeah. upskilling yourself. um,
There's another interesting question where Kavya is asking how to transition from marketing to UX. I'm assuming Got that's it. the question. Got it. So Kavya, it doesn't matter आप marketing से हो या कहीं से भी हो, it's the same path, right? So the course that I have made, that is literally for transitioning. The 15 videos take you through the entire process की beginning से लेके end तक क्या करना है. But just to quickly summarize, it's literally understanding how to solve problems. It is understanding the tool, because you need a tool, right? And that tool is Figma. So you learn Yeah, Figma, and on Figma you solve problems, you create case studies, you apply to jobs. It is as simple as that, but it takes time. There's a lot of nuance in it. It is easy, but it is not very simple. So you have to Mhm. go through a lot of stuff. You know what to do, but in the end you have to invest your time. So that is why I've made that course on YouTube. Got it. Srushti is asking, I have 6+ years as a graphic design experience as a graphic designer, but I have not worked on any UI UX projects. But my design process and thinking is strong. Yeah. How can she transition? Is there a Yeah. structured way, or Same. Like literally, it's the same. Even if your design power, design thinking is great. I was reading this comment called "More Power" by Shruti. Thank you, Shruti. That's why I got confused. But yeah, it's literally the same. I'm telling you, just spend 100 hours. Don't quit before that. Just follow everything that I've mentioned in that Notion page. So I shared this Notion page. It is literally a blueprint. Like it's a blueprint to take a job. Like it mentions everything that I learned and got a job in a very short amount of time as compared to other people who are working with me. I'm also gonna try and bring in Pragya on the stage, maybe, because she had a question and it just needed some elaboration on that. Let me try and see how I can do that. So this was what Pragya's question was. Okay. I did my master's degree thesis on user experience towards an interactive future, which gave me in-depth knowledge about more interactive physical interfaces. What are your thoughts on that? So, Yeah. Pragya, if you're just looking for thoughts, I think Ansh, maybe you can answer that. But Yeah. in case you have any specific question about this, I'm not sure if you are allowed to share this thesis or it's available somewhere online, and maybe we can elaboratively answer on some of the Yeah. specific questions. But No, if I any feel like thoughts, Ansh? all kinds of theses just allow you to expand your own knowledge, right? So Pragya, my recommendation would be to just like do more stuff. It is as simple as that. See, it's not like this one thesis is going to get you your next job, and Yeah, there is literally no downside to any research. So yeah. it has just made you a better person, and all you have to now do is keep working and having more projects. Yeah, got it. I'm gonna take the last question, which is by Vidu Z. Can you also share few resources to help work on building personal brand and communication skills? I think this is really important, and again, I might be wrong here in my perspective, but I have not seen a lot of designers who are like extrovert or free flowing. They do free flowing conversations. Yeah. Most of them that I have worked with, or I've known them, are a little introvert and quiet, killers. So it's how do you suggest they can probably build a great personal brand, and Yeah. also get better at their communication skills? Yeah, I feel like, see, in the end, it is more about what you can do. See, a brand is literally about trust. Why would someone trust you? Because you're good at something. So the first step is you become really good at something, right? If you're good at something, more people will wish to associate themselves with you because you will help them achieve your goals. When you help people achieve their goals, they start talking about you and they start praising you. And word of mouth is the best branding you will ever have. Of course, you can have a logo, you can have your videos and identity and everything, but all of that is just like the fluff, it's the packaging. But below the packaging, a true brand is about trust. So figure Yeah, out how can you become really good at something, then how can you help other people achieve their goals, then document everything on the internet. Whatever it is that you're working on, put it on YouTube, Instagram, Medium, LinkedIn, Behance, put yourself on the internet, and soon people will start recognizing you. And that is the first step of building a brand. And later on, logo and everything wo sab kar hi lete hain. yeah, yeah. Okay. I think anybody, if you have more questions for Ansh, maybe you can DM him on Instagram, or Yes, just and reach out to him. if you really really liked all the resources, make sure you post a story. Like take a Yeah, screenshot and tag Pepper Content, tag me. We would love to see your reviews on Instagram today.
Yes, I think Ansh has shared his Instagram link here in the chat. Please, please, if you have liked any part of this, feel free to share it on your IG stories. Tag him and tag the Pepper page so that we can reshare it. And there's also an interesting express giveaway that's going on the Pepper's IG page right now. If you can go and answer the question which is on our IG stories, you might get an Amazon voucher of 1,000 rupees. So go ahead, do that, try that out if that works. I think somebody's also saying, Anj, that they have DM'd you. Yes, I think Got it. he'll respond to you. I think maybe there's an Message influx me of too again, many wait, then DMs. message me again because I keep deleting them. So just Yeah. message me So again. just maybe DM once again, and I think that would be, he would respond to it. But Ansh, thank you so much for doing this. I think this was really great. Glad that we are able to share all of these resources, and I'm gonna go and take that course that's there on YouTube to understand more about UI UX. Thank you, Thank you Vavan. so Thank much. you. Thank you so much, everybody, for attending this. We'll continue again on this stage with Neha Sharma, popularly known as Neha Doodles, in the next 5 minutes. So join in back again in 5 minutes at stage 3. See you, Thanks, folks. Ansh. Thank you so Bye. much. Bye.